अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ यू ऑल आर डूइंग गुड, यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर एंजॉयिंग योर लर्निंग। सो टुडे आई एम अगेन हियर विद न्यू लेटर। सो स्टार्ट करते हैं अपना अल्फाबेटिकल एडवेंचर। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर अगेन विद न्यू लेटर एंड विच लेटर इज दिस? That is letter F. Letter F. And you know what is the sound of letter F? The sound of letter F is F. आपने इसको फ नहीं पढ़ना. That is like fan, fish. अब आप भी सोचिए कि letter F के sound से कौन कौन से word आते हैं. This is how the capital letter F look like. And this is how the small letter F looks like. So students, move on to your book. Hello, meet the letter F. F. F for fish and F for fan. And look at the picture. We can see so many objects which start from letter F in this page. Like flower, fish, fan, frog. Instructions for the teachers. So dear teachers, you have to keep the students engaged in different STEAM learning activities. So for the science portion, discuss with them the advantage we take from the fan and discuss with them the types of fan: pedestal fan, ceiling fan, hand fan. For technology portion, show them the video of letter F and listen the sound of letter F. For engineering portion, give them a paper and ask them to draw a frog. For arts portion, guide them to color the object on next page which start from letter F. And for the math portion, give them a task to count the object near them which start from letter F. Students, move on to the next page, hands-on. Color the object with initial sound F. ये आपके सामने 3 pictures हैं. इसमें आपको जो लगता है कि letter F से start होता है, to color that object. The next is read the letter F and take its relevant picture. अब letter F लिखा हुआ है, आपके सामने different objects हैं. जो लगता है कि letter F से start होता है object, उसके नीचे आपने tick लगा देना है. उसके बाद है fill color with a crayon according to the instructions. Now this is the formation of letter F. Hold the crayon and start writing F. How we are going to write it is pull down, go across, go across. This is how we write capital letter F. And for the small letter F, pull back, go down, cross from center. This is how we write a small letter F. Next exercise is trace and write with the pencil. अब आपने pencil से letter F को trace करना है, दोनों letter F capital and small, उसके बाद इसको खुद से लिखने की try करनी है. I hope dear students आपको letter F की recognition हो चुकी होगी. आप उसको लिख सकते हैं, उसका sound बता सकते हैं. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं next video में with new letter. अल्लाह हाफिज़.